disease consists of the number one was the inactive carriers, number two was chronic hepatitis for more than 6 months, cirrhosis of liver, and the hepatocellular carcinoma. The common presentation in the ward will be the cirrhosis of liver with complications. This is a very common presentation. And which complications? Number one, the ascites, distension of abdomen. Number two is a esophageal varices, upper GI bleeding, and number third is a portosystemic encephalopathy. These are the commonest presentations in the ward. And number third complication already is a hepatocellular carcinoma. This is all very common. So causes of the cirrhosis of liver, we already told you the commonest cause in here in the Pakistan is the viral hepatitis B, D, and the C. Very commonest causes. Then the second metabolic causes like the hemochromatosis, Wilson disease. Then the causes are the autoimmune diseases, alcoholic cirrhosis, non-alcoholic fatty liver disease, and sometimes cryptogenic, and the last is the cardiac cirrhosis. The cardiac cirrhosis may cause the cirrhosis of liver. So actually the viruses, they cause the injury over the liver parenchyma and they will lead to the fibrosis and the inflammation. The fibrosis is the dominant, that's why the patient's liver become disturbed in the architecture and they become shrinking. The level is a micronodular occur in the viral hepatitis as compared to the macronodular occur in the alcoholic cirrhosis of liver. And due to this fibrosis shrinkage, they will exert the pressure over the portal vein, and this portal vein pressure results the portal hypertension, and this portal hypertension will exert the pressure over the spleen and causes the splenomegaly, and this splenomegaly may present the hypersplenism, and hypersplenism the blood CP will show the pain cytopenia. Again this portal pressure causes the anastomosis at the lower end of esophagus or in the rectum, and the patient will present the varical rupture or it may present the gastropathy. So gastropathy is also a feature of the portal hypertension. So these conditions the patient present the upper GI bleeding, sometimes may present the lower GI bleeding, and this portal pressure also causes the vasodilatation of the splenic areas. Splenic circulation की vasodilation बढ़ जाती है, blood flow बढ़ जाता है. That's why it causes the decreased effective circulatory volume, and this reduced effective circulatory volume will decrease the perfusion of the kidneys, and kidney will respond by the formation of the aldosterone, and that's why patient has the hyperaldosteronism we label as a secondary hyperaldosteronism. This secondary hyperaldosteronism results the fluid inside the peritoneal cavity and causes the ascites. So ascites, it may be mild, it may be moderate, it may be severe. It may cause if the patient has severe ascites, they will exert the pressure over the intestine, they will cause the sluggish movements, bacterial overgrowth, and that's why the bacteria translocate from the intestine to the peritoneal cavity. Patient may present the SBP, spontaneous bacterial peritonitis, and this spontaneous SBP having the risk of the HRS, hepatorenal syndrome. So these are the actually complications of the presentation of the cirrhosis of liver. The splenic vasodilatation as decreased movements also causes the bacterial overgrowth, number one, and number two, it also causes the ammonia formation. And this ammonia formation normally detoxification कहाँ पे होती है? In the liver, but because of the liver failure, they will have the increased levels, and this ammonia level enters the brain and causes the astrocyte swelling, and this astrocyte swelling patient present with the hepatic encephalopathy. That's why we label as a portosystemic encephalopathy. So ammonia is a main culprit in case of the hepatic encephalopathy. There are other culprits too, like GABA, mercaptans. All the other chemicals or compounds may involve the pathogenesis of the hepatic encephalopathy, but ammonia is very common. So today's case was the patient having the hepatitis B and the C. She is presenting with the altered or unconsciousness with the gradual onset. So any patient with the C and B
and then having the gradual onset, this is most probably a hepatic encephalopathy. So ask about the patients, the unconsciousness. Unconscious gradual means the patient initially may have the confusion, may have the irrational or behavior changes. Patient may have the inward sleep pattern. In the daytime he will be sleepy, in the night time he will awake. This is the inward sleep pattern. This is the grade 1. So ask about the how it happens, how it start, and usually the patient, whenever they start the hepatic encephalopathy, there may be underlying precipitants. What was the precipitant factors? So common precipitants are, number 1 is a constipation. The constipation results the ammonia formation. Number 2 was upper GI bleed. This may precipitate the hepatic enceph. Number 3 was high protein diets. Mostly the patient present after the idosa because they take the more meat. So high protein diet is a precipitants. Number 4 is electrolyte imbalance, because these patients, because ascites, taking the diuretic therapy and they may develop the hyponatremia, hyperkalemia. So these are also precipitant factor for the hepatic encephalopathy. Then the drugs. Which drugs? Sedation, sedative drugs. They may precipitate the hepatic encephalopathy. Then any surgery. Tips, I already showed you tips to make us the hepatic encephalopathy or pervasive liver disease. So always ask what is the reason behind the hepatic encephalopathy, how it start, and sometimes very common is a poor compliance to drugs. Suppose we start the patient with the diuretic therapy or electrolyte therapy, but patient stop the drugs, patient will again present with the hepatic encephalopathy. So how it start? This is very important, onset. Then how it proceed in the coma within 2-3 days, 4 days, 5 days, and that time what was the any fever, any pain abdomen, any cough, because always infections also precipitants. So what is reason? And during that time any history of seizures, any history of the incontinence of urine or feces, any trauma. Ask about all these conditions when you taking the history of the patient with the hepatic encephalopathy. Then the second para will be important positives and negatives. Then ask about the distension of abdomen, it is worsening or reversing, any tenderness over the abdomen, because SBP, and SBP may precipitate the hepatic encephalopathy. Then ask about the bowel habits of the patients, ask about the protein intake, ask about the drugs, all should be in the second para. Then stool color, any melena, you should ask about this color of stool, any upper GI bleeding. So this should be in the important positives and negatives. Then third para would be treatment and outcome. How she was diagnosed, Hep C and B, and which treatment therapy he was treated or not, PCR was done or not, ultrasound was done or not, all the things he having the during the stay in the hospital or during the course of the disease, it should be mentioned. Then the patient is also diabetic, how she was diagnosed a case of diabetes, when she was diagnosed, which drugs she was taking. Then the systemic inquiry, then the eyes, then the family history, past history, drug history and socioeconomic history. I already discussed about previously the what you should know in the these history taking. And then aakhir mein you go for the examination. About examination, the patient, in the patient is conscious, this is another method. Patient unconscious is another method, because unconscious patient में you will not do the same protocols as a conscious patients. वहाँ पे प्रोटोकॉल अलग है इन द अनकॉन्शियस पेशेंट में, बट कॉन्शियस पेशेंट में आपको वही चीज़ें, अगर पेशेंट कॉन्शियस हो गया, अभी ये पेशेंट आपका रिकवर हो गया था, तो वहाँ पे आपको फिर वही आपको हिस्ट्री एग्जामिनेशन, एब्डोमेन एग्जामिनेशन, स्प्लीन, लिवर, हेपेटिक फिलिपिंग ट्रेमर्स, सारी चीज़ देखनी पड़ेगी, जॉन्डिस, एनीमिया, साइंस ऑफ पोर्टल हाइपरटेंशन, सारी चीज़ हमने डिस्कस की थी, वो करनी पड़ेगी आपको। उसके बाद आपको इन्वेस्टिगेशन करनी है। Which investigation will advise in these patients? Hepatic encephalopathy. Mostly the hepatic encephalopathy is a clinical diagnosis. And what is hepatic encephalopathy? This is a neuropsychiatric illness due to liver diseases. तो यहाँ पे
History suggests of the hepatic encephalopathy, otherwise with a limited source of the investigations. But sometimes it's very difficult to differentiate between the hepatic encephalopathy or other types of the encephalopathies. Then we can go for the investigations. And specific investigation are the serum ammonia level. हम advise कर सकते हैं. Sometimes EEG. You can advise a CT and MRI to differentiate from other diseases. You can advise these are with the routine analysis. So routine में blood CP. If the patient underlying infection, the TLC count be raised. Then LFTs may be disturbed. Electrolytes are important because sometimes the electrolyte imbalance may precipitate the hepatic encephalopathy. Is very important. वो एडवाइस करेंगे आप यूरिया कैटेनिन इलेक्ट्रोलाइट्स एंड आफ्टर रिकवरी पेशेंट यू कैन एडवाइज अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन. सो दीज आर दी इन्वेस्टिगेशंस. नाउ द मैनेजमेंट क्या करेंगे आप? जी सर क्या करेंगे आप? फर्स्ट स्टेप क्या होगा आपका? सबसे पहले असेसमेंट होगी आप, बिकॉज पेशेंट डीप कोमा में हो सकता है, पेशेंट ग्रेड 1 में भी हो सकता है, 2 में भी होता है, 3 में भी होता है, 4 में भी होता है. सो डिपेंड्स ऑन द स्टेटस ऑफ द पेशेंट. सो फर्स्ट इज असेसमेंट. इफ द पेशेंट इज अनकॉन्शियस देन दिस इज another step. The patient is conscious, then another steps. So assessment is the first step. आपने assess किया, the patient is unconscious, then you start the general measures. Which general measures? The first step in the comatose patient will be general measures. And general measures start from pass the IV line, pass the NG tube, and pass the catheter. These are the general measures. And every patient have with the unconsciousness. So first step will be assessment and the general measures. The second step क्या होगा? The detection and the treatment of the underlying precipitant factors. What reason behind the hepatic encephalopathy जो हमने डिस्कस कर लिए. हाँ, जो भी होगा कॉन्स्टिपेशन उसको रिलीव करें, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस को उसको ठीक करें, हाई प्रोटीन डाइट रिस्ट्रिक्ट करें आप. ये सारी चीज़ें जो है वो आप करेंगे. डिटेक्शन एंड द ट्रीटमेंट ऑफ द अंडरलाइंग प्रिसिपिटेंट फैक्टर्स. दिस इज सेकंड स्टेप. द थर्ड स्टेप इज द measures to decrease the levels of the ammonia. This is the third step. Which measures are we are using? The first line measurement is advised electrolytes orally, because we already passed the NG tube. So advise the 30 ml electrolytes per hour till stool pass. How much? 30 ml per hour. How to reduce ammonia? Anybody? How to cause the reduction of the ammonia level? One is the laxative method. By increasing the movements, this wash out the bacteria from the GIT. Number 1. Number 2, this lactulose is ingested by the intestinal bacteria. Then the bacteria release the fatty acids, and this fatty acids change the pH of the intestine या colon from alkaline to the acidic. And this acidic pH, the ammonia will convert into ammonium, and ammonium is excreted from the GIT. So by this way the ammonia levels are decreased by the help of lactulose. So oral lactulose is the initial therapy in every case of the portosystemic encephalopathy. And the second option is that you can pass the enemas with the lactulose through rectum, enemas. So preferred route is the oral. This is the first step in the ammonia level reduction. Second is the antibiotics. The antibiotics are divided in two groups. One are the absorbable and one is non-absorbable.
The absorbable are the metronidazole, flagyl, and the vancomycin. And non-absorbable antibiotic rifaximin जो यूज करते हैं वार्ड्स में, दिस इज सेफेस्ट ड्रग, बट द demerits that the rifaximin is a expensive drug as compared to the flagyl. Flagyl is a cheaper drug. So they have the two options, either to go for the oral flagyl or you can advise a rifaximin 550 BD and flagyl 250 8-hourly. With you can combine with the lactulose too. So there is a second step to decrease the ammonia formation or ammonia reduction levels. And third step sometimes you can use is a LOLA, LOLA, L-arginine, L-arginine. This is available in the form of the Hepamers sachet. Hepamers सुना है नाम है Hepamers का? Hepamers नहीं सुना? Hepamers जो आती है सचेट में आती है, इंजेक्शन भी आते हैं और सिरप भी आते हैं. So you can advise the 2 to 3 gram Hepamers sachet in divided dose per day. This also may help in the reduction of the ammonia level. So these are the steps of management of the hepatic encephalopathy. The final step is a treatment of the underlying cause. सब फिर बेहतर है कि आप थर्ड सोर्स स्टार्ट करें ना विद अटेंडेंस से. यहाँ वो तो ज़ाहिर पेशेंट का तो उसमें जी सर, बट जो भी इंफॉर्मेशन मिले आप बताएंगे सर माई सोर्स ऑफ हिस्ट्री इज अटेंडेंट, तो एग्जामिनर समझ जाएगा कि भाई सोर्स जो अटेंडेंट है ज़ाहिर वही प्रॉपर आज हिस्ट्री नहीं मिल सकती है. मगर जो मेन चीज़ें हैं तो वो तो आपको देखें. हेपेटिक एन्केफेलोपैथी से डायग्नोसिस वेरी इजी है, वेरी इजी डायग्नोस. कहीं पे आपको जो पेशेंट देख के पता चल जाएगा ये पेशेंट किस चीज़ का है. मगर ये कम से कम थोड़ी हिस्ट्री लेनी पड़ेगी. यहाँ पे हेपेटिक इनकेफ तो हो गया, डायग्नोस कर लिया, वो पेशेंट ने बता दिया भाई पेशेंट का बी है और सी है, डायबिटीज़ है, और पेशेंट आस्ता आस्ता बेहोश हो गया, तो दिन में क्या आ गया, बस वो तो डायग्नोस हो गया. मगर हिस्ट्री में कम से कम ये पता चले कि व्हाट रीज़न बिहाइंड दिस, वो इम्पॉर्टेंट है. क्या रीज़न था, दवाइयाँ बंद कर दी, वो रीज़न था, कोई इन्फेक्शन हुआ, कोई दवाइयाँ खाई, कोई इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होगा, तो वो इम्पॉर्टेंट है. ठीक है ना. तो ये चीज़ें जो मैनेजमेंट में हेल्पफुल होती हैं. बाकी केस तो आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड है. आपने स्टार्ट किया मैं पेशेंट नोन केस ऑफ बी एंड सी हैविंग द ग्रेजुअल ऑनसेट ऑफ द अनकॉन्शियसनेस, तो एग्जाम तो समझ जाएगा. तो हो सकता है एक दिन आप डायरेक्टली पूछे व्हाट्स द स्पेसिफिक फैक्टर्स, व्हाट इज स्टेजिंग ऑफ द हेपेटिक इनकेफ. ग्रेड्स करते हैं ना, ग्रेड 1 2 3 4, तो आपने एक केक बना के दे दिया. वहाँ तो मुश्किल नहीं होती, मुश्किल वहाँ होती है जहाँ पे डायग्नोसिस करना मुश्किल हो जाता है. यहाँ तो आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड केस है. यहाँ कभी कभी बी या सी का हिस्ट्री नहीं है, पेशेंट अनकॉन्शियस हुआ है, सडन हुआ है, क्या हुआ है, पेशेंट का टिन को पता नहीं है, तो वहाँ का डिफिकल्ट होता है. तो वहाँ पे फिर चीज़ें कि पोर्टल हाइपरटेंशन साइंस है नहीं है, स्प्लीन, वहाँ पे केस फिर बनाना पड़ता है. यहाँ तो केस आपका बना हुआ है. तो यहाँ पे क्या है इशू, देखिए केसेस प्रेजेंट जो करती हैं दो इश्यूज होते हैं. यहाँ तो पेशेंट्स का डायग्नोसिस का इशू होता है, या तीन. सेकंड इज अ पेशेंट प्रेजेंट कॉम्प्लिकेशंस, एंड थर्ड इज अ मैनेजमेंट इश्यूज. डायबिटीज़ तो है बट कंट्रोल नहीं हो रही है, तो मैनेजमेंट इशू हो गया. हेपेटिक इनकेफ तो है, बार बार हो रही है, इशू क्या है, तो वो इश्यूज़ हैं. तो इश्यूज़ को डिग करते हैं, उसको ट्रीट करते हैं पेशेंट्स के. नॉट ऑल द पेशेंट्स हैविंग द इश्यूज़ ऑफ द डायग्नोसिस, द इश्यूज़ ऑफ द मैनेजमेंट टू. तो दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. सो यहाँ पे इफ़ यू फाइंड द पेशेंट हैविंग द लॉन्ग केस, तो लॉन्ग केस में यहाँ पे आपको मोस्टली जो एग्जामिनर होगा वो आपको ले जाएगा एग्जामिनेशन फाइंडिंग एंड ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स एंड काजेस. ठीक है सर. तो यहाँ तो हिस्ट्री तो आसान हो जाती है आपकी यहाँ एज कम्पेयर टू अदर सिस्टम्स. और स्ट्रेट फॉरवर्ड केस हो जाए, डिस्टिंक्शन है तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, अपर जी ब्लीडिंग है तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है. केस नॉन केस है, यहाँ पे नॉन केस नहीं है, न्यू पेशेंट है, तो वहाँ पे थोड़ा मेहनत करनी पड़ती है. व्हाट इज रीज़न बिहाइंड द अपर जी ब्लीडिंग, कोई वेराइसिस हुई है,
पेशेंट कोई पेप्टिक अल्सर डिजीज़ हुई है, कोई क्या हुआ है, क्या रीज़न है, तो वहाँ मुश्किल हो जाता है। मगर पेशेंट अगर बता रहे BNC है तो माइंड तो आ जाएगा आपका। अगर BNC पेशेंट है, अपर जी ब्लीडिंग के साथ आया है, तो आप लोग समझ जाएंगे दिस इज मोस्ट प्रॉबली गैस्ट्रोएसोफेजियल वराइसिस, तो वो तो स्ट्रेट फॉरवर्ड होगा आपका। सो एनी क्यूरी सर? हेपेटिक इनकेफेलोपैथी में, हेपेटिक इनलार्जमेंट में, हेपेटिक इनलार्जमेंट में हेपेटिक बुरी कब मिलेगी? जब हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा होगा, ठीक है ना। अगर उसमें सबको नहीं मिलेगी ना, कार्सिनोमा मिलेगी ना आपको। कार्सिनोमा होगी तो वहाँ पे हाई फ्लो की जैसे आपको मिल सकती है। जी सर, वो जस्ट लाइक वाइब्रेशन सेंस होता है, ठीक है ना। दो चीज़ होती है, एक होती है बुरी अगर आप नॉर्मल सुन सकती हैं तो यहाँ पे आप थोड़ा सा प्रेस कर लें अपने आप को, थोड़ा यूं करके प्रेस करके सुने आप, तो आपको बुरी नज़र आएगी किस तरह बुरी होती है। इवन यहाँ पे बुरी बोल सकती है अगर साउंड है तो। और एक होती है वीनस हम, वो क्या है, वो भी जस्ट लाइक बुरी, टर्बुलेंस ऑफ ब्लड है, मगर लो पिच साउंड होता है। एंड वीनस बुरी अब करते हैं वीनस नॉट एक्सप्रेशन स्प्लिनिक इन्लार्जमेंट, जहाँ पे स्प्लिन इन्लार्ज होती है तो वहाँ वीनस बुरी सुनते हैं, और जहाँ पे आर्टियल को प्रॉब्लम होती है वहाँ बुरी सुनते हैं हम। सो बुरी, हेपेटिक बुरी, रिनल बुरी, ठीक है ना, एओर्टिक बुरी, ये सारी हम एब्डोमेन में देखते हैं। कैरोटिड बुरी, थायराइड में बुरी। राइट हाइपोकॉन्ड्रियल में हमें एब्डोमिनल साउंड सुनाई देंगे? जी सर, अगर लिवर इनलार्ज्ड है तो वहाँ पर सर हमें साउंड्स सुनाई दे रहे हैं, अभी हम आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे। कौन से साउंड्स? GIT में साउंड्स है, बोर्बोगोनी भी होती हैं, ठीक है ना, बाउल साउंड्स। और तो बोर्बोगोनी होंगे सर, वो तो बोर्बोगोनी साउंड जो GIT में नॉर्मल होते हैं वही होंगे। पत्थर की कैसे कहाँ से आएंगे जी? प्रॉपर डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रहे थे कि कैसे साउंड है, क्रैकलिंग के साथ साथ क्रैकल्स होते हैं, ऑब्स्ट्रक्शन होती है, गोगनी साउंड्स, गैसेस साउंड्स होती हैं, वो तो नॉर्मल साउंड्स होते हैं अक्कर एवरी 3 मिनट्स। ब्रूई तो मैंने कहा ना कि वाइब्रेटरी साउंड्स होता है। हाँ चलो बुरी वाला खोलो ना, YouTube खोल के देखो बुरी। नहीं सर, अभी हमने पेशेंट जो देखा ना उसको हेपेटिक स्प्लेनोमेगाली थी, और फिर जब हमने उसको हेपेटिक स्प्लेनोमेगाली में क्या होता है, स्प्लीन जब इलाज होगी ना, दे विल स्प्लीन एंड लिवर जब इलाज होगा, दे विल पुट द प्रेशर ऑफ द एब्डोमेन इंटेस्टाइन। जब इंटेस्टाइन में प्रेशर होगा तो ज़्यादा प्रेशर की जैसे मूवमेंट्स बढ़ जाती है इंटेस्टाइन की, तो वहाँ पे बोर्बोगोनी साउंड्स बढ़ जाते हैं। तो गुरु नहीं सुनी अपनी आपके यहाँ? हाँ जी सर, जहाँ पे ऑर्गन इन्लार्जमेंट तो वहाँ पे आपको सुनने साउंड्स ओवर द लिवर आप सुनेंगे आप ब्रूई के लिए, और हम के लिए सुनेंगे आप स्प्लीन के लिए, ठीक है ना। तो वो मिस नहीं किया। अगर पेशेंट को लिवर इनलार्ज है, टेंडर है, हार्ड है, वहाँ पे यहाँ पे हार्ड टेंडर लार्ज, वहाँ पे यू कैन सस्पेक्ट द हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा, तो वहाँ पे यू कैन गो फॉर द ब्रूई। अदरवाइज अगर फॉर्म है, नॉर्मल है, तो वहाँ पे कोई रीज़न नहीं होता। मगर जहाँ पे हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा होगा तो वहाँ पे ब्रूई आपको सुननी है। तो सर आपकी हेपेटिक इनकेफ हो गई, आपकी असाइटीज़ भी हो गई। अब असाइटीज़ के कॉम्प्लिकेशंस क्या होते हैं मैंने बता दिया। SBP, ये क्या है SBP सर? स्पॉन्टेनियस बैक्टीरियल पेटोनाइटिस। ये क्यों होती है सर SBP? मैंने कहा था ना कि ड्यू टू ह्यूज वाटर इनसाइड द पेटो कैविटी इट पुट द प्रेशर ओवर द इंटेस्टाइन, जिसके जैसे मूवमेंट्स स्लो हो जाती हैं। स्लो मूवमेंट्स के जैसे क्या होता है, बैक्टीरियल ओवरग्रोथ हो जाती है, जिसकी जैसे ट्रांसलोकेशन द बैक्टीरिया फ्रॉम द GIT टुवर्ड द पेटोनल कैविटी जाते हैं, और कॉमन ऑर्गेनिज्म इज द E. coli। और पेशेंट क्या प्रेजेंट करेगा अगर SBP होगा? फीवर एंड टेंडर एब्डोमेन, एक प्रेजेंटेशन ये होगी। सेकंड प्रेजेंटेशन में द फीवर ऑफ वर्सनिंग ऑफ द डिस्टेंशन, पहले तो डिस्टेंशन सही चल रही थी, अचानक वर्स हो गई, बढ़ गई, तो दिस सेकंड प्रेजेंटेशन। द थर्ड प्रेजेंटेशन इज हेपेटिक एनकेफेलोपैथी, because SBP and infection patient present the hepatic encephalopathy, and number 4 presentation is the HRS hepatorenal syndrome.
सो हेपेटोनियल सिंड्रोम क्या है, इसकी टाइप्स क्या है, दिस इज नेक्स्ट असाइनमेंट. ठीक है सर, वो लिखी आ जाएगी. हेपेटोनियल सिंड्रोम टाइप 1 टाइप 2 डेफिनेशन. डायग्नोसिस के बाद आपको बाकी चीज़ें ज़ाहिर अंडरलाइन का इलेक्ट्राइज बेसलाइन वो करना है. उसके बाद क्या करना है, मैनेजमेंट. सो मैनेजमेंट कैसे करेंगे आप, जनरल मेजर्स, फीवर को कम करने के लिए आप पैरास्टामोल देंगे आप. उसके बाद एंटीबायोटिक्स. द ड्रग ऑफ चॉइस इज द सेफलोस्पोरिन, सेफ्ट्रैक्सोन 2 ग्राम OD या सेफोटेक्सिम 2 ग्राम 6 hourly. These are the drug of choice in case of the hepatic encephalopathy, SBP. And after 24 hours, again draw the fluid. And if the 50% reduction in the WBCs are in the neutrophils within 24 hours, it means the patient is responding. 50% reduction in the WBCs and neutrophils. It means the patient is responding. You continue the drug for the 5 days. Number 1. Number 2, SBP will result the HRS, hepatorenal syndrome. So for the prevention of the hepatorenal syndrome, you will advise IV albumin 1.5 gram per body weight in day 1, 1.5, and 1 gram per body weight second day and third day. It will prevent the hepatorenal syndrome. So this is the management of the SBP. So the patient developing the SBP, they also risk for the recurrence too. So for recurrence, you can advise the norfloxacin or Septran DS वो दे सकती है पेशेंट में फॉर लॉन्ग टर्म फॉर द प्रोफाइलिसिस. रिस्क ऑफ दी मैंने बता दिया. रिस्क क्यों बढ़ जाता है, बिकॉज ऑफ द ह्यूज एसाइटिस, बैक्टीरिया ओवर ग्रोथ. नंबर 1 एक रिस्क था. दूसरा रिस्क क्या था, बिकॉज ऑफ डिक्रीज प्रोटीन्स इन द पेरिटोनियल कैविटी ऑफ ब्लड, बिकॉज प्रोटीन्स हेल्प इन द ऑप्सोनाइजेशन. जब वो कम हो जाएगी तो पेशेंट प्रेजेंट विद द हाई रिस्क या इंक्रीज रिस्क ऑफ द बैक्टीरियल इन्फेक्शन. So decreased proteins also the risk factor for the SBP2. So antibiotic therapy, prophylaxis, presentations, investigations, so we also complete the SBP. Any queries, any question? End करें सर अभी.